You said not entitled to election symbol, but सवाल ये था कि election जायज हुए या नहीं हुए, जायज से मराद legally हुए with compliant with 208 or not. And that issue, that particular point ultimately actually crystallized on the 13th of January when it attained finality with the judgment of the Supreme Court, which upheld your order. So in that sense, speaking for myself, I can understand your 14th January through to 7th February Extra time argument, we'll call it. But my question is, वो जो आपको कानून जिसको जो 240 है उसको तो पहले आपने मैं बस तेज अपने अगले सबमिशन पे जा रहा हूँ. देखिए you have to be fair. अब कह रहे हैं कि जी वो कर लेते तो हम फिर 240 या 218 या ये वो इन्वोक करते. अरे भाई 22/12 को जब आपने किया उस वक्त करते ना, बता देते कि जी इलेक्शन सिंबल तो हमने ले लिया, हम रादर हम दे नहीं सकते. No, let me rephrase that. Actually, आपने दिया, आपके पास डिस्कशन थी, आपने ले लिया, लेकिन आप पार्टी हैं फॉर दिस इलेक्शन, वो आपने उस वक्त किया नहीं. अब आप जब इशू फाइनली क्रिस्टलाइज हो गया, अल्टीमेटली डिटर्मिन हो गया, आपका ऑर्डर अपहोल्ड हो गया, अब फिर आप मुद्दा उन पे डाल रहे हैं, ये तो गैर मुनासिब. नहीं, मगर आपकी देखें ये गैर मुनासिब बात, मजीद आपकी गैर मुनासिब बात ये है कि जो ये तो तस्लीम शुदा है, ये आपका मौक़िफ़ नहीं है. उन्होंने कहा कि जी हमने इलेक्शन नहीं करा सके, हमें 1 साल का मज़ीद वक्त दीजिए. तो एक्स्ट्रा टाइम अगर गेम खेला ही नहीं गया, देखिए गेम खेला ही नहीं गया तो कहना कि जी हमने गेम खेल लिया, तो वो ज़रा मुनासिब बात नहीं है, क्योंकि ये तो तस्लीम शुदा बात है. अगर हम आगाज़ करेंगे सबसे पहले तो उन्होंने ख़ुद ही आपको दरख्वास्त की जब प्राइम मिनिस्टर थे कि जी मुझे साल देते हैं, आपने इतना फ़राख़दिली दिखाई, आपने कहा साल ले लो पहले. तो फिर ये आप जो है ना, ये आप अपना कवर करने के लिए हम पे डाल रहे हैं, मगर आप कसूरवार थे. आपने साल अगर ना देते, कुछ कम वर्ष देते तो शायद हो जाती बात. Point 4 is the point 4. My point 4 is that एक सेकंड सब एक थोड़ा सा इसमें, क्योंकि बार इस जजमेंट का जिक्र हो रहा है 13 जनवरी का. अगर जो आपने हमें ये CMA दी है 5839 सेकंड वॉल्यूम, अगर आप देखें ये बड़ा नाम है अली मोहम्मद खान साहब, ठीक. अली मोहम्मद खान साहब ने अपने डॉक्यूमेंट्स जमा किए 24/12/2023 को. डेट नोट करें 13/1/2024 में जजमेंट आ रही है, लेकिन ये डॉक्यूमेंट सबमिट हो रहे हैं 24/12/2023. This was the last date for filing of nomination papers under the election program. इस तारीख को जो उन्होंने पेपर जमा किए, पेज 175 पे डिक्लेरेशन में अगर आप देखें, आप पढ़ें जरा डिक्लेरेशन में, वॉल्यूम 2 5839. इस तरह बेशुमार है, चूंकि अली मोहम्मद खान साहब के मेरे सामने आ गए तो इसलिए मैं. His declaration form is nil. 5839. और पेज क्या था? 175. सेकेंड वॉल्यूम. ये देखें इसके डिक्लेरेशन. I belong to NA23. I belong to nil. ब्लैंक है और उन्होंने साथ सर्टिफिकेट कभी नहीं लिखा. तो क्या आपका ऑर्डर आ गया हुआ था ना, तो क्या पार्टी और नहीं, तो वो लिख लेते, बाकियों ने भी लिखा है. सिंबल के वाले से ये बात नहीं आई कि आप इंडिपेंडेंट हो. ये सर्टिफिकेट इनका नहीं आया, ना इन्होंने डिक्लेरेशन लिखी. क्या इनको पहले से पता था कि उनको सिंबल नहीं मिलेगा, या इनको पहले से पता था कि वो डिबार होंगे? सिर्फ एक प्लीज, ये एक नहीं है. सारी रात में इसको देखता रहा, इसमें बेशुमार ऐसे हैं जो ब्लैंक है या जिन्होंने शुरू से इंडिपेंडेंट लिखा है. तो क्या 24 दिसंबर तक जजमेंट आने से पहले इनको इल्हाम हुआ? ये मुझे समझ नहीं आती कि जो समझ नहीं आती वो देख के. सिकंदर साहब, मैं फोर्थ पे आ जाऊं जी. थैंक यू माय लॉर्ड. माय फोर्थ सबमिशन इज दैट CMA 3554 of 2024, which has CP number nil attached to it. This is the other CPLA which hasn't been numbered. This is the number of the CMA, and then it says CMA in CP number nil, which is filed by Kawal Shahzeb. Whatever.
Mr. Kanwal show. That's English. I mean, I thought Urdu was a My problem. lord, bus it's. I beg your pardon, sir. I actually have told them I've been making the Shahzada ko main Sahibzada kar raha hu aur Sahibzada ko maine Shahzada. I beg your pardon. But my lord, coming back to this, give me the volume. 3554. No, give me the volume. We have this excellent languages school here in Islamabad called Namal. Namal, I'm going to enroll, my Namal lord. program could help I will, my lord, I will. on the lighter side. Yes, Go ahead. my lord, in my defense, I only went to school and read Urdu till class 6 in Pakistan. Then I was not here. I went to school abroad. So you 3554? 3554, my lord. My lord, simple. If the paper book is there before my lords, I'm referring to the main CPLA. Kanwal Show Zab. वो बैठी हुई है, आप इनसे पूछ लें इनका नाम क्या है. I will take that also. My lord, I just have a straightforward submission here that based on the averments in paragraph 2 of the CPLA nil, the petitioner has no locus at all. Her locus is based on anticipation and hope that one day she may be named in the Form 66. That is too remote to entitle the petitioner to be heard. My lord has heard learned counsel for this petitioner by way of grace is what I would say, but strictly applying the general principles this court normally applies to regulate its jurisdiction in these matters, this petitioner has absolutely no locus standi, and that is the ECP's submission that this be dismissed simply on that basis. What is her prayer in this petition? Prayer clause zara padhe. Her prayer, sir, is ये तो CPLA है, so they'll be seeking leave to appeal only here, my lord. 26 page prayer. जी बिल्कुल sir. It is therefore most respectfully prayed that this honorable court may be pleased to grant leave to the petitioner against the imputed judgment dated this, passed by a division bench of the Honorable High Court. And my lord, very technically speaking, this prayer has been granted because this is a civil appeal now. So this is a civil appeal. This prayer is granted in 333. That is, my lord, my fourth submission, and now I will conclude, my lord, by my lord, Mr. Justice, where are the books? Oh, I didn't quite get your fourth submission. My lord, my fourth submission was simply that the other CP nil, the petitioner has no locus standi to file. That should not be heard. Its submissions cannot be taken into consideration because simply could not come directly to the Supreme Court, is not an aggrieved person, is not going to be affected by this judgment in a direct manner or to an extent that would entitle her to be heard and for the CPLA to be numbered. It should be dismissed on that basis alone. And the description she has given herself of herself, she is still in the PTI and is head some wing of the women's wing. That paragraph 2 of her petition sets out her own details according to herself. Based on those, she has no locus. My lord, the next submission, Lord, the next one is for Mr. Justice Yahya Afridi at the end of the hearing on the last date, sought names of the members of the PTI, let me say it like this, who were elected as independents but have to date